Good evening, sir. Good evening. I am Narendra. I am from Andhra Pradesh. I did my BTech from Vignans University in the year 2023. I am currently working as a detailer, rebar detailer. I have 1 year of experience as a detailer. Along with that, I did a structural designing internship for 4 months, in which I learned softwares, all the designing softwares like ETABS, StatPro, SAFE, RCDC, along with that AutoCAD, and I also know RebarCAD. In this, I learned from basics to advanced, like analysis, different types of analysis, like say dynamic analysis in that dynamic analysis, different types of analysis like time history, response spectrum, pushover analysis. Okay. These yes, Mr. Naren, can you just explain us what are the things we can do in ETFs? In ETF softwares, what are the analysis we can do? sir sir analysis we can do all the type of analysis like wind analysis, seismic analysis, and all the dynamic analysis also we can do. Okay. So, what is the difference between static analysis and dynamic analysis? Sir, theoretically, static analysis in static analysis we consider only internal forces and external forces, whereas in dynamic analysis we also consider movement of inertia forces also. Inertia forces, right? Yes, sir. Okay. Mr. Narendra, you just mentioned you know the rebar CAD. What is the use of rebar CAD and what is the benefit of that? Sir, it is for detailing purpose, reinforcement detailing purpose. In that we can, after drawings we get from designing softwares, we just get the dia and we just get dia and spacings. With the help of that, in the rebar CAD we can easily detail reinforcement, and we can get the in finally we can get bar bending schedule with the software, and we also can get the CNC code through which it is sent to CNC machines. With the help of that, bars will be cutted along accordingly. Great. Okay. In 1 meter cube, how many bricks, Mr. Narendra? So, I- In 1 meter cube, how many bricks? how many bricks can be placed, sir? Yeah, yes. It's number of bricks. Sorry, sir, Okay. I haven't What remembered. is what is the mixed proportion of M20? 1 is to 1.5 is to 3, sir. Right now, you're using the Indian code for the detailing or any other code for the detailing? Sir, actually, for detailing, they used to provide all the typical sections in the structural drawing itself. We don't follow any code, sir. We only follow structural drawings. Structural drawings comes in the stat file or ETF file. Sir, like complete shop drawings like that, sir. So, what is your role? Sir, we used to detail, sir, by by separating each element, slab, wall, whatever the element we get, team leader assigns, we used to detail accordingly, complete Means in a. drawings come, but that drawing is not in details. You need to do the in details. Yes, sir, the drawings will be such that um, transverse reinforcement, like that dia and spacing they will provide in slabs. Typical reinforcement will be provided, sir. Okay, they provide you. You just And we need to draw the each element in a particular way, that we need to show this in this direction we are seeing how it will look, elevations and all we need to draw, measurement with the accurate measurements. And we used to there will be ranges, sir, from
we will give range from here to here automatically in the software. How many number of bars according to the spacing, that number of bars will be coming, sir. Placed. Okay. In ReWarCAD. Yes, sir. Okay. Right now I'm going to hire you as a structure engineers. So how Yes, your sir. previous experience is useful for me? Sir, uh, from my previous experience, I am I will be very quick in AutoCAD drawings. If any requirement is there in a structural, after designing, if there will be a need of detailing, I Hmm. can also do detailing along with the designing. Okay. थैंक यू सो मच नरेंद्र, दिस वाज नाइस टू टॉक विद यू। नरेंद्र, कोशिश करो कि इसमें ना कुछ डिटेलिंग टू कोड्स के बारे में जानकारी ले। कैसे है कि जो काम तुम बता रहे हो, ये काम बहुत इजी काम है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसका कोई वैल्यू नहीं हो पाएगा मार्केट में। Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हें एटलीस्ट SP16 यूज करो, ठीक है, सॉरी SP34, ठीक है। वर्ड्स यूज करो कि मैं इस कोड के अकॉर्डिंग करता हूँ, तो थोड़ा सा क्या हुआ, टेक्निकल आए ना। दूसरी चीज ऐसे करो कि लाइक भले ही नहीं करते हो, बोलो तुम्हें स्टेट प्रो रीटैप की फाइलें आती है, विल जस्ट चेक द एरिया ऑफ एनफोर्समेंट, वी कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू दैट द एनफोर्समेंट। थोड़ा Yes. टेक्निकल हुआ, है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद ब्रिटिश कोड एक दो यूज कर सकते हैं, जैसे कि BS कोड एक होता है, BS 68 ऐसे कुछ करके है। ब्रिटिश डिटेलिंग कोड डालोगे तो आ जाएगा, BS हम 8666। कनाडा का करते हैं सर, उसमें ASC ऐसा कुछ कोर्स ACI वगैरह। होगा, ACI हो सकता है। हाँ, यस सर, यस सर। हाँ, तो वो जो कोड है वो अमेरिकन कोड जो है वो कनाडा फॉलो करता है, तो अमेरिकन कोड, ब्रिटिश कोड और इंडियन कोड के नाम याद कर लो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो बोलो कि मैं उसके अकॉर्डिंग करता हूँ, तो उससे यस क्या सर। हुआ कि उसकी वैल्यू क्रिएट हो गई ना। अभी मैंने बोला ना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट, इसका सर, बहुत बड़ा सेंस था। मुझे और एक माने कोड वगैरह कुछ बोलने से उसके अंदर से कुछ पूछ लिया तो पूछेंगे वैसे। ना, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस तो काउंट करना है, ठीक है। यस। अभी ऐसा लगना चाहिए कि तुम एक तरीके से जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर का प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, ये फीलिंग आनी चाहिए। तो उसके लिए नो डाउट वो आपका पूछ सकते हैं, आपको बताना चाहिए, है ना? तो यू नीड टू जस्ट रिकॉल दैट, ठीक है। आप बता दो कि पर्टिकुलर ये काम होता है, हर कंपनी का पर्टिकुलर काम ही होता है, ठीक है। जितना पढ़े हो बताओ, ये इतना मेरा काम है, वहाँ पर ये रोल है मेरा। तो कुल मिला के हमें तुम्हारे ये 2 साल का एक्सपीरियंस जाए खराब नहीं कर सकते ना। यस। इसको यूटिलाइज करने के लिए यही एक सबसे बड़ा सेंस है कि इसको करोगे तो अपने आप यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो, मैनुअल के लेक्चर्स वॉच किए थे क्या? यस सर। कितने लेक्चर्स किए थे? 4 लेक्चर्स। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलेगा, ओके, थैंक यू सो मच। दिस वाज नाइस टॉक विद यू। नाउ मिस्टर अनिरुद्ध, मिस्टर अनिरुद्ध, Yes, sir. ओके, रेडी? Yes. ओके, अनिरुद्ध, right now you are using your background truss. That is truss or something else? What is this in the top of your background? Sir, sir, this is a truss. Truss, right? And if that is in PEB, that is called rafter. Yes. Okay, and there is a column also. What is the density of steel? Sir, density of steel is 7850 kg per meter. Meter cube. Yes, sir. Okay, what is the difference between RCC and PCC? So RCC is a reinforced cement concrete and PCC is a plain cement concrete. In RCC, we are using the uh, concrete as well as the steel, and in PCC we only used cement only, sir. What Cement are or concrete. what are the different load can come on walls? Sir, on walls there is a dead load, itself load, and the live load of beam, and Which IS code we follow for the live load? IS 875 part 2, sir. And what is secondary beam? Sir, secondary beam is a beam which is used when there is no support provided at another corner. Another basically there is no column at another side. So if we transfer the moment to that beam to the main beam, then we use the secondary beam. How to provide release in
beam in ETABS? So to provide release in ETAP, we first to select that beam which we want to release then go to assign, then go to frame, and there is the option of our partial safety factor, partial fixity, release and partial fixity, and from that we release the beam. Suppose I want to draw the curve shape beam in ETABS, how can we draw? So in ETAP, if you want to draw the curve shape beam, there is a option in that. So if you want to assign, if we first we define the all the which material we want to make a beam, then go to assign, and there is a option comes that continuous type, and there is another option which I don't remember, but when we select this option, there then we make the curve beam. What is the use of SAP 2000? The use of first of all, the full form of the SAP is the Structure Analysis Program 2000, and it is and we use this software to analyze and design the structure, complex structure in ETAP and so SAP 2000 software. Okay. And what is the file format of SAP 2000? .sdb. SDB. And what is the file format of safe software? No, sir, I don't remember. And ETABS? .edb, sir. .edb. What is the full form ETABS? Extended three-dimensional analysis system. Analysis building system. Analysis build system. Okay. Why should we hire you, Narendra? Sorry, Anil. Sir, because the job profile which you are hiring, sir, I think I'm a better candidate from the other one which they are outfront, and I assure you that, sir, I work perfectly. I work uh, very honestly with your company so that I make the company, I get the company more profit from my What's side. what's your hobby? Sir, my hobby, not that much hobby, but I watch movies and basically watching movies. Sir. This is your hobby? Yes, Okay. Last time which movie you watched? sir, last time I watched the uh, Bollywood film, uh, and that Bollywood film is Krantiveer, old film. Nana Patekar is the lead actor in that. When you watched that movie? Yes, sir. When you watched this movie? Uh, 2 days back, sir. Okay, 2 days back. Okay. And who was the director of that movie? Uh, the director of movie, I don't remember, sir. Okay. What's your goal, Anuj? Sir, my goal is to become a successful structural engineer and make and my another goal is to make in which company I work. I make that and my the main goal is to make them as much as profitable through my skills. Okay. This is my main goal. थैंक यू सो मच अनिल दिस वाज नाइस टू टॉक विद यू अनिरुद्ध थोड़ा जल्दी से फेस करो कॉर्पोरेट के कुछ इंटरव्यूज को जिससे तुम्हें आइडिया लगे कि मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ है ना मेरे मॉक में अच्छा परफॉर्म रहे हो कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर भी परफॉर्म अच्छा ही करोगे ठीक है यू कैन गेट सम एक्सपीरियंस उसके लिए ऑनलाइन ढेर सारे अप्लाई करो कोशिश करो जो वर्क फ्रॉम जो ऑफिस से एटलीस्ट जो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाए उनको जरूर कंडक्ट करो है ना ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए कंडक्ट करो ठीक है Yes, sir. तो वो कंडक्ट करोगे तो उससे क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा अभी मेरे को 2 घंटे पहले किसी ने फ़ोन किया था लुकिंग फॉर द जॉब मैंने बोला यस ठीक है मैं जस्ट खाली था तो मैंने कहा चलो थोड़ा देखते हैं क्या है कैसे है थोड़ा बताएगा तो सामने वाला फिर उन्होंने अपनी सारी हिस्ट्री सुना ली तो फिर उसके बाद मैंने बोला ओके ठीक है आई ओके विद दैट ठीक है 2-4 क्वेश्चन उन्होंने पूछे मैंने 2-4 क्वेश्चन के आंसर दिए उनको मैनेजमेंट से क्वेश्चन करके सब कुछ हो गया और उसके बाद उन्होंने पैकेज पूछा तो मैंने वो जो पैकेज बोल दिया इंडिया में पॉसिबल नहीं है 40 लाख का पैकेज बोल दिया मैंने तो उन्होंने बोला ओके थैंक यू मुझे करना नहीं था मैं तो जस्ट चेक कर रहा था
में आके क्या बोलते हैं, इससे एक्सपीरियंस मिलता है ना। Yes, तो sir. अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा काफ़ी दिन बाद इंटरव्यू देखे, तो मैंने कोशिश अभी सोच रहा हूँ कि कुछ दिन बाद फिर से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही फेस करेंगे इंटरव्यूज़ को, और इंटरव्यूज़ को फेस करके आइडिया लेंगे, क्योंकि पहले तो मैं बहुत करता था, अभी नहीं देता हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती, समय भी नहीं मिल पाता, बट करना चाहिए आपको ज़रूर। ठीक है ना। Yes, sir. ओके जी, चलिए नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर उमर। एंड गैस हम लोग आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस का सेट तैयार करने का प्लान कर रहा हूँ, जिससे कंप्लीट स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस आ जाए ऊपर। ठीक है, ऐसे से क्वेश्चन आ जाए जो स्ट्रक्चर में एक लिस्ट कंडीशन पे आने के बाद भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आंसर नहीं देंगे, सिर्फ क्वेश्चंस दे देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप लोग को भी कहीं जाना है, तो जस्ट वो एक क्वेश्चन का बुकलेट हो सकता है, मान लीजिए उसमें 500 के आसपास क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन आप रट डालें अगर, तो आपको कहीं से भी ये श्योरिटी हो जाए कि यार आएगा तो यहीं से आएगा, है ना। तो हम ऐसा जी कुछ प्लान कर रहे हैं करने के लिए। इससे क्या होगा कि आप बीम का तो स्टार्ट कर दिया है, बीम का भी 3 क्वेश्चंस डिजाइन किया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। ठीक है, आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा करके अपडेट करते जाएंगे कि देखो भाई यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं ना। तो क्योंकि इस तुरंत तो 500 क्वेश्चन जी रेडी नहीं हो पाएगा, लेकिन उससे क्या होगा कि आप ये श्योर हो जाएंगे कहीं पे जाओ यहीं से पूछेंगे, ऐसा रिसर्च करना है ना। तो वेरी जी सुन जी विल डू दैट। ओके, नाउ मिस्टर उमर रेडी। ओके, यस सर Umar, right now you're looking for the job in the RCC structure. What are the advantage of RCC structure and what are the disadvantage of RCC structures? basically RCC structure is reinforced concrete structure. uh, Advantage are um, they are more reliable, and it would be more economical, and also very safe. And disadvantage? And disadvantage is they emit they are not eco-friendly, uh, and We can't reuse. We can't reuse we can't use. and we can't transfer from one place to another place. Okay, this type of disadvantage we have, so we can say. And okay, right now looking for the job in the structure engineer. So can you just tell us what is the use of hanger bars, Umar? Hanger bars. Hanger bar hanger bar is provided in the uh, basically provided for the support Where? in the beam. Okay. In What the is the use of face reinforcement? Face reinforcement. No, face no. reinforcement are the main reinforcement Okay. main reinforcement provided in the structure members. Difference between one-way slab and two-way slab. One way slab is length by breadth ratio. L by B ratio is when less than 2 is the two way slab, and L by B ratio is greater than 2 is the one way slab. Okay. Greater than a two, so that is called one-way slab. Okay. In what is One the way slab. difference between LSM and WSM? LSM is the limit state method Hmm. in which we consider factor of safety. Hmm. Uh, in the working state method, uh, compared to the LSM, factor of safety is not adequate, What is and CSSD rule in dynamic analysis? CS. SD rules. Sorry, sir, Hmm. I'm not Okay. What are the from. different mode shape uses? Means what is mode shape basically in dynamics? Mode shapes are response in response spectrum analysis, time history analysis, and post delta analysis.
the difference between response spectrum analysis and time history analysis? Response factor analysis is basically depends on the time, uh, and we analyze in the different mm, acceleration, um, time related to acceleration Hmm. when the dynamic load applied, and the time history analysis is depend upon the earthquake occurs in that particular area. Uh, Data of the earthquake, directly we put the data of the earthquake uh, Okay. for analyze the building structure. Okay. Umar, why should we hire you? Because I am hardworking, Hmm. quick learner, and self motivated person. I keen to learn new thing quickly, and Okay. Uh, definitely I am suitable for this particular. what you like to do at your free time? Actually, mm, uh, I have no free time. At least I am busy all the time. When I free, I sleep. Okay, you like to do sleep, right? At your free time. Sleep. Yes. वैसे तो फ्री टाइम सबके पास होता है उमर, ऐसा नहीं है। ठीक है, फ्री टाइम तो हर इंसान के पास होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो होना चाहिए, है ना? ठीक है, मेहनत करना चाहिए, इसमें कोई दरार I नहीं है। use it in sleeping. I use it in the sleeping. ओके, दैट इज ओके। तो हाउ मेनी आवर्स यू स्लीप?